Mumbai. Academic partner University. 15 Education, TV 15 Education, program producer and director Prof. Dr. Dinesh Kumar Pandey. Rheumatoid Arthritis Handbook. Chapter 4, Laboratory Investigations in Rheumatoid Arthritis, Clinical Handbook Style, Blood Tests, Report Analysis and Clinical Interpretation. Number 1, Introduction. Rheumatoid arthritis RA के diagnosis, disease activity assessment और treatment monitoring के लिए laboratory investigations बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. कोई भी एक blood test अकेले RA का diagnosis confirm नहीं करता. Diagnosis के लिए clinical features plus laboratory tests, imaging findings का संयुक्त मूल्यांकन किया जाता है. Number 2, Rheumatoid Factor. Test name Rheumatoid Factor, IgM antibody. Purpose, autoantibody detection, RA diagnosis में सहायता normal range, लगभग 14 आयु है मिली, lab के अनुसार reference range बदल सकती है. Interpretation, RF result, clinical meaning negative, RA को पूरी तरह exclude नहीं करता. Low positive, early RA या अन्य autoimmune disease में हो सकता है. High positive, RA की संभावना एवं severity risk बढ़ सकता है. RF positive अन्य conditions में भी हो सकता है. Sjögren syndrome, SLE, systemic lupus erythematosus, chronic infection, hepatitis C, कुछ स्वस्थ व्यक्तियों में, anti-CCP antibody. Full form, anticyclic citrullonated peptide antibody. Importance, RA के लिए सबसे महत्वपूर्ण एवं specific biomarker में से एक. Interpretation, anti-CCP level meaning negative RA की संभावना कम हो सकती है, positive RA की संभावना अधिक. High positive. Joint damage risk अधिक हो सकता है. Clinical importance, early RA detection, prognosis assessment, disease severity prediction. Clinical pearl, anti-CCP positive patient में RA का long-term joint damage risk अधिक हो सकता है. 4. ESR, erythrocyte sedimentation rate. Purpose, body में inflammation का संकेत. Normal range, male 15 mm, female 0-20 mm, उम्र और lab reference के अनुसार परिवर्तन संभव. Increased ESR causes active RA infection, chronic inflammation, anemia. Limitation, ESR केवल inflammation बताता है, RA specific नहीं है. 5. CRP, C-reactive protein, active inflammation का marker. Importance, disease activity monitoring, treatment response assessment. High CRP indicates active disease, increased inflammation, possible flare. MUV 6, CBC, complete blood count. RA में CBC बहुत महत्वपूर्ण monitoring test है. Parameters, hemoglobin RA में anemia of chronic disease हो सकता है. WBC count, infection या drug effect की जानकारी देता है. Platelet count, active inflammation में बढ़ सकता है. Liver function test. क्यों आवश्यक है? RA की कई दवाएं लिवर पर प्रभाव डाल सकती है, विशेष रूप से methotrexate, leflunomide, sulfasalazine. Important parameters, test, meaning, AST liver enzyme, ALT liver enzyme, bilirubin, liver function, albumin protein status. KFT kidney function test. Important parameter in kidney function का मुख्य marker, EGFR kidney filtration capacity बताता है. Importance in RA, drug dose adjustment, NSAIDs safety monitoring, long-term therapy monitoring. Number 9. Additional screening before advanced therapy यदि biologic DMARDs या JAK inhibitors शुरू करने हो. Required tests, tuberculosis screening, Mantoux test, Agira test, hepatitis screening, HBsAg, anti-HBC, anti-HCV. Number 10. RA laboratory monitoring schedule general guide, test monitoring, CBC regular follow-up, LFT, DMARD therapy monitoring, KFT, drug safety, ESR, CRP, disease activity, RF anti-CCP diagnosis and prognosis. Red flag laboratory findings, very high CRP, severe anemia, low WBC count, elevated liver enzymes, reduced kidney function, इन स्थितियों में चिकित्सकीय मूल्यांकन आवश्यक है. Clinical Pearl RF और anti-CCP diagnosis में मदद करते हैं, लेकिन treatment decision मुख्य रूप से clinical activity और disease severity पर आधारित होता है. Quick revision box anti-CCP equal high specificity RA marker. RF equals supportive diagnostic marker. ESR CRP disease activity monitoring, CBC LFT KFT drug safety monitoring. Biologic therapy से पहले TB and hepatitis screening आवश्यक. अगला अध्याय Chapter 5 Imaging in Rheumatoid Arthritis. X-ray, ultrasound, MRI joint damage assessment, early detection and clinical interpretation. Rheumatoid Arthritis Handbook Series continues.